तो फ्रेंड्स वेलकम टू किटीज गेमिंग। और आज हम नई रेलवे इंटरव्यू नाम का गेम खेलने वाला है। एक नया गेम है, 20 रिलीज एक्सबॉक्स गेम पास में अवेलेबल है। तो कंट्रोलर सपोर्ट नहीं है लग रहा है, नॉट श्योर। तो ऑप्शंस में जाके देखेंगे कंट्रोल सपोर्ट ऐसा कुछ है क्या। कंट्रोल गेम पार्ट ऑन कर देते ओके, अभी कंट्रोलर सपोर्ट आ गया हमको। लोड गेम ऑप्शन है, लेकिन मैंने कुछ भी गेम खेला नहीं है तो लोड नहीं कर सकता है। पहले हमको ट्यूटोरियल करना पड़ेगा 1 मिनट। तो मैंने नई लाइट डाला नहीं है, 1 मिनट लाइट भी ऑन करना है मुझे। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। ट्यूटोरियल तो करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अभी तक के ट्रेन टाइप का सिम्स मैंने अभी तक खेला नहीं है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा हमको ट्यूटोरियल। ओके, बेसिक्स। तो ये तो 1 आवर का स्ट्रीम है। मैं एक्चुअली 12:30 का मुझे जाना है, तो 1 आवर में फिनिश करना पड़ेगा। लोडिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है ऐसा लग रहा है मुझे। तो कोई देख रहा था, वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस। थोड़ा हिंदी गेमर। Greetings. I've been expecting you. I'm Lawrence Vanderswag, and I want to help you find your way in the world of railways. I'll tell you everything you need to know to set up a successful transport company. Of course, if you want to make money transporting passengers, mail, and freight, you need to understand where the need for new railway lines is greatest. This is, for example, where goods are produced. Okay. Have a look at the map. Move the map in all directions and change the zoom level. Okay, ऐसा zoom कर सकता है हम। And now turn the camera in all directions. Very well. Now take a closer look at the area around the two cities, San Francisco and Sacramento. San Francisco and Sacramento. This is Sacramento and this is San Francisco. Oh yeah, अच्छा है actually, I like this. Sacramento एक सिटी है। Cities and rural businesses are crucial to the transportation business. Cities produce factory goods, mail, and travelers. There is a need for transportation to other cities for these goods. Farms in the countryside produce basic goods and raw materials, which are also needed by cities. Okay. Farm से हमको produce लेके city में लेके जाना है। As long as there are no railroads, all goods must be transported via simple rural roads. But these transports do not cover long distances, are tedious and slow. Therefore, the transport volume is not very high. Okay. तो छोटा गाड़ी में लेके आए तो ट्रांसपोर्ट वाले कम होगा, हमको बड़ा गाड़ी में मींस ट्रेन में लेके आना है। Through the railroad, the old transport routes can be replaced. In addition, cities and farms that were previously too far apart can be connected. Improving goods supply ensures that cities grow. Rural businesses in the countryside also grow because they can sell more goods. Take a closer look at Sacramento. Under the name, you can see the size of the city. Move your focus to the city and you'll see what it currently produces for export to other cities. Sacramento has a steady supply of passengers, mail, and export goods every day, some of which is destined for San Francisco. San Francisco, in turn, has goods for Sacramento. Build a rail link between the two cities to take these shipments. हमको ये सैन फ्रांसिस्को और सैक्रामेंटो का मिडिल में एक रेल रोड कंस्ट्रक्ट करना है। पहला काम वही है। पहले सोच रहा था ये ट्रेन चलाने का गेम है, लेकिन एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट फीवर जैसा एक गेम है ऐसा लग रहा है। सैन फ्रांसिस्को और सैक्रामेंटो हमको कनेक्ट करना है। First, construct a railroad station in Sacramento.
Open the building construction to select it. Then move it to a valid location within the Sacramento City region. It's best to rotate it so that the tracks face San Francisco. ओके, सैक्रामेंटो में हमको एक रेलवे स्टेशन बनाना है, वो किधर करना है? सैक्रामेंटो ये प्रश्न तो हमको ये देखो, ये ट्रेन यूसेज नहीं है सैक्रामेंटो में अभी तक। वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट बहुत सारा लोग है, मेल भी बहुत सारा है। एक्सपोर्ट वेयरहाउस एंड प्रोडक्शन सैक्रामेंटो में है, मीट का ऐसा कुछ है। ये क्या है? ट्रैक कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग इंजन। ओके, हमको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्रेस करना है और तो सिटी के अंदर हमको एक रेल कंस्ट्रक्शन करना है। मैं सोच रहा हूँ इधर बनाऊँ हमारा रेलवे स्टेशन। ठीक है, वेरी बिग। ओ नहीं, ऐसा आता है क्या? रोटेट कैसे करना है? ओके, ऐसा रोटेट कर सकते हैं हम बिल्डिंग। थिंक आई विल प्लेस लाइक दिस। तो इसका अंदर बनाना है हमको, अंदर बनाना है क्या? यू मस्ट कंस्ट्रक्ट योर फर्स्ट सिटी स्टेशन इन योर होम टाउन ऑफ सैक्रामेंटो। तो बहुत बड़ा है, इधर रख सकता है ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत बड़ा है, बिल्डिंग्स भी जाएगा। इसका बाहर नहीं रख सकता है क्या? इसका अंदर ही बनाना है। ये बिल्डिंग तो पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा इधर। ठीक है, इधर मैं इधर रखेंगे। By the way, each station can be expanded after construction with up to 2 additional buildings and 7 tracks. However, certain buildings like factories can get in the way of expanding the tracks. Therefore, do not build the station too close to these buildings. Certain buildings factories can get in the way of expanding. Therefore, do not build the station. फैक्ट्री जैसा बिल्डिंग का सामने हम ये नहीं बनाना है। हमने ऑलरेडी किया है ना, अभी क्या है? More tracks and additional. Now build the second station in San Francisco. Move the station to a valid position within the city borders and turn it preferably to the southeast so that you can get well around the bay in the next step. ये एक्चुअली ट्रांसपोर्ट फीवर का एक वर्जन है, ट्रांसपोर्ट फीवर। आप लोग वो गेम खेला है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अच्छा गेम है। मुझे ट्रांसपोर्ट फीवर पसंद है, लेकिन ज़्यादा नहीं खेलना है। And now establish a track connection between the two cities. To do this, open the track construction mode and select the first station track at both stations in turn. The stations will then be connected and the entire track will be shown to you as a preview, which you can still modify. Select the first station track in both stations will then be connected and the entire track will be shown to you as a preview, which you can still modify. जूम करके देखेंगे हमारा रेलवे का। हमने इधर एक रेलवे का लाइन डाला है, ये हमारा रेलवे स्टेशन है। ये इधर एंड हो रहा है इसका। ये गेम ट्रांसपोर्ट फीवर से कॉम्पीट कर सकता है क्या? मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये क्या है, टाइम पीरियड इसमें है, मीन्स ऑल टाइम का है। ट्रांसपोर्ट फीवर में कैसा है कि वो बहुत पुराने टाइम पे हम ऐसे डेवलप होकर नया टाइम में आता है।
मीन्स 1980 में स्टार्ट करके हम 2000, 2011, 2022 ऐसे ही लेके जा सकते हैं कॉन्सेप्ट में। इसमें कैसा है मुझे उसमें इसमें ऐसा नहीं है ऐसा लगता है। एक्शन मेन्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मोड सेलेक्ट फर्स्ट सेशन ट्रैक एक्सपोर्ट सेशन डन। ये सेलेक्ट कर रहे हैं हमको और मुझे लग रहा है वो दूसरा सेशन का भी हमको सेलेक्ट करके कनेक्ट करना है इसे। ये ट्रांसपोर्ट फीवर सेम है। इधर कनेक्ट करना है हमको इंसर्ट ट्रैक पॉइंट। The preview track follows the shortest path. However, this is not always possible and often not the cheapest solution. Especially tunnels and bridges can be very expensive. In the overview, you can see how the track construction costs are composed. ओवरव्यू में ट्रैक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ओके कॉस्ट डिटेल्स इधर है। ट्रैक्स, अर्थवर्क्स, टनल, इसके लिए भी हमारा हाथ से बहुत सारा पैसा जाता है। ठीक है, ये है हमारा ट्रैक। To change the course of a proposed track, you can insert track points and then move them. Now set such a track point once by selecting the track. Okay, हमको एक ट्रैक पॉइंट बनाना है इधर। Now optimize the cost of the track with the help of track points. Please note that length, slopes, as well as tight curves will have a negative effect on the travel time of your trains. Then confirm the construction. Hold delete planning execute plan. Optimize the cost of the track with the help of track points. Please note that the length, slope of solar ट्रैक पॉइंट किधर है हमारा वीडियो में? ओके, ऐसा कर सकता है। Very good. The track has been built and can be used immediately. Now set up a rail line. ट्रैक आया है, अभी हमको रेल लाइन बनाना है। मैंने क्या सोचा है, ऐसा वाला गेम ही नहीं है। Now set up a rail line. First close track construction mode and open new rail line with the action. Okay. Now add your stations to the rail line by selecting them one by one. It's enough if the rail line has 2 stations. Now assign the type of locomotive to the train line which all trains should use. At the moment, you have only one locomotive to choose from. Now specify how many trains should run on the rail line. To start off, 1 train is enough. Okay. The display tells you how many trains are currently active and how many you have requested. For each train, you have to pay the cost of purchasing the locomotive. Now, confirm this cost. Fantastic! The train is now immediately deployed and will soon be on its way. Now, close the edit mode to see the rail line in action. Zoom in on the train and watch it load. The train is loading goods, passengers, and mail destined for the other city. Let's wait until the train reaches the other city. By the way,
You can increase the gameplay speed at any time. Also, the game runs faster when you zoom out. Oh, here is the train. Zoom in on the train and watch it flow. The train is loading goods, passengers and many passengers. So let's wait until the... You can increase the game speed at any time. Also the game runs faster when you zoom out. हम zoom in करने के टाइम में गेम स्लो में जाता है. मेरा ट्रेन आ रहा है. टनल का अंदर चला रहा है गाड़ी. इधर भी एक टनल है हमको. टनल का अंदर नहीं जा सकता ऐसा लग रहा है. अंदर गाड़ी बहुत बड़ा टनल है. इधर डाटा पूरा अवेलेबल है हमारा. Oh, it's बहुत कर सकता है. क्या अभी ट्रेन फास्ट में जा रहा है. तो अच्छा है. मुझे लग रहा है मुझे ये प्रॉब्लम आएगा. कंट्रोल ग्राफिक्स प्रॉब्लम है. किधर है? बहुत दूर में लग रहा है. जल्दी आओ. बहुत फास्ट है. The train has arrived and is being unloaded. The numbers rising above the train are the transport revenue. This is the most important source of revenue for your company. However, each train also generates personnel and maintenance costs. But more on that later. Keep watching for a bit, and this tutorial will end. Tutorial is completed. Do you want to start the next tutorial? ओके हम ट्यूटोरियल कंप्लीट किया है. मैंने फर्स्ट 1 आवर भी नहीं किया है, लेकिन 30 मिनट्स का गेम प्ले किया है. एनीवेज गाइस, आई एम स्टॉपिंग द गेम प्ले. मेरा टाइप का गेम नहीं है. मैं सोच रहा था वो ट्रेन चलाना का गेम है. ये तो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट फीवर टाइप का एक गेम है. ये ऐसा वाला गेम पसंद करने वाला लोग भी होगा, लेकिन इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. एनीवेज गाइस, मुझे ट्रांसपोर्ट फीवर एक्चुअली पसंद है. ये तो सेम गेम है, इसलिए ज़रूरत नहीं है खेलने का. ऐसा लग रहा है मुझे. एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग. सी यू नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. कमेंट सेक्शन में दो कौन सा गेम आपको देखते हैं. हम चैनल में फिजिक्स बेस्ड एंड सिमुलेशन गेम्स खेलने के लिए सोच रहा हूँ. एनीवेज, give me your feedback. Subscribe to the channel. See you in the next video. Bye bye.